Okay, we are live in next three, two. All right. We are live. Greetings, everyone. All right, sorry. Greetings, everyone. My name is Athar Saxena, and you're watching our channel, Youth Masters for a club, which is Go Global Club. And a special thanks to Mr. Anush Garg and Mr. Pushpang Thakur and our TNP department and LNCT group of colleges. So, today's seminar is about higher education in Canada, and this seminar is called Beyond Borders. And today we have a special guest, and his name is Ankur Sahu. Sir, could you please join us and introduce Okay. yourself? So hello everyone. This is me Ankur Sahu and I came Canada recently in Jan 24. I came here for pursuing my masters in information system security in Concordia University, it is in Montreal. And I would like to thank to the LNCT group and the Anush sir especially to organize this event so I can able to connect to you guys. Thank you so much, sir. Now, I'd like to also invite our co host, Shashwat Nath. And again, a special thanks to our moderator, Sankalp. Shashwat, could you join us now? All right, Yeah, am I he's audible? going on. Yes, you are. Yeah. So, Okay. Ankur, sir, let's start with the first question, which is, I guess, being is going to be asked by everyone. And here it is. So, what inspired you to choose Canada for your higher education? Firstly, the you can say the job market. When I was in college in the second year, and if you are in IT, then you must Hmm. know the PST sir, पुष्पेंद्र सर. Okay, उनकी एक please. लाइन याद होगी तुम Hmm. लोगों को शायद कहा होगा कि बेटा 2 साल है एक लैंग्वेज कर लो Hmm. प्लेसमेंट तुम्हारा. Hmm. ये शायद अब True. बोलते होंगे. तो Hmm. उस टाइम पे उन्होंने यही चीज कहा था और हम लोग लैंग्वेज के पीछे पड़ गए थे. बट ड्यूरिंग कोविड हम लोगों को प्लेसमेंट्स का दिख नहीं रहा था इतना कि क्या मार्केट होने वाली है और इस ड्यूरेशन में Hmm. मैं रिसर्च कर रहा था कि बाहर कैसे जाया जाए. तो बस उस रीज़न से मैं बाहर की रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, क्या-क्या मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सब चीज़ें उस ड्यूरेशन में पता करी. और एक Hmm. बैकअप के लिए प्लेसमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एलएनसीटी से हैं तो प्लेसमेंट हमको देना ही है. सो बस Very well said, sir. इस री There इस was a lot of रीज़न के तहत uncertainty due to COVID and stuff, right? या श्योर. We always must have a backup plan, right? And having to do masters or chasing placements, you must make a mind between them, right? So श्योर. the second question, which comes along the way, is how has the transition to a new country been for you, like both academically and personally? Firstly, talking about academically, Hmm. so the basically challenge is this, like in India, we are used to do like course-based problems, like if someone Hmm. is teaching, we can learn. In Hmm. Canada, it's totally practical. Like there is theory, but very little. Like for the masters, they are the professor think that student already know everything. They just teach the topic, and later they give the project. Like for Hmm. me, we don't know how to work on Docker, and on the first Okay. day, he gives me project for the compromise the Docker containers. Hmm. So everything is practical here. और दूसरा कोई एग्जांपल दूं तो जैसे हमने आरएसए एल्गोरिदम पढ़ी है, हमको क्या पता Yes, we did. आरएसए एल्गोरिदम होता क्या है, साइंटिस्ट का नाम पता है, क्या करती है ये पता है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं किया. यहाँ पे ये सब कुछ हुआ नहीं, सीधा प्रोजेक्ट मिला है कि आरएसए बना के एक चैट एप्लीकेशन बनाओ. तो RSA, ये like एक a lot of us या may not be very familiar with that, but I guess it's an इट्स algorithm, right? And इंक्रिप्शन it's used in एल्गोरिदम या cybersecurity. Yeah. Since you're also जो pursuing भी अगर मैं cybersecurity. टेक्निकल Hmm. मोस्ट या दैट्स वाई जो भी मैं अगर टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज करूँ तो वो मैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में ही यूज करूंगा क्योंकि मैं वही All परस्यू right. कर रहा हूँ. There's a lot of difference in time zones as well. So, like, did it Yeah. suited you well, or like initially you had some troubles? Initially, there is a trouble. Like I used to wake up at 4, but Hmm. now after being 2 months, yeah, it's similar to the Indian time. Like when I was to sleep, like 2:30, 3:30 in the Hmm. night, and same here as well. I would request sir to tell us like it's 8:30, it's 8:45 now in India, right? So like, what's the time there? It's here like 10:15. In Canada, there's 10:15 two time a.m. zones. Yeah, it's 10:15 All right. a.m. in the morning, Hmm. and in the year, two times time has changed. In summers, Hmm. it's 10:30 hours before after the Indian time, and in Hmm. winter, sorry, in summers it's 9:30,
and in summers it's 10:30. Basically, you can say 1 hour ahead. Hmm. 50, sorry, 10.5 hours ahead. Quite complicated to be honest, right? Yeah. So Like basically, you since can you're do the yeah, trick. sorry, go on. Just Hmm. add 1.5 hours and turn the day into night and night into day. That's all. That's Yes. actually quite helpful. I would keep that in mind. Yeah. And now I have this personal question, like I was wanting to ask you from a long time. Like, what's the most surprising aspect of Canadian culture? Like, because in India it's quite famous for the culture, like tradition, religion, everything, and our Yeah. history and everything. But Canada, like, we are not very sure about. It's like, what's the specific or like surprising aspect which you noticed when you went to Canada? A big cultural shock or a big change? As far as like I have only a 2 months here, so Mm-hmm. the problem I faced in cultural shock, like for the jobs, if you go for the interview, they will just ask what you have on Canadian experience. They require Mm-hmm. Canadian experience in every aspect. Like if you are applying full-time job, they ask you for the Canadian experience. If you tells the Indian experience, they wouldn't count it. So that's Mm-hmm. the part in the your career life. Or if you're Mm-hmm. talking about academics, so academics is basically similar, the methodology Mm-hmm. is similar, but difference is there like practical things, like professors are well researched, well educated. Like in India we used to see the research paper of the famous authors. So here in Canada we can learn by them. Like one of my professor is Dr. Junian. He is a very Mm-hmm. good researcher. Recently he got a grant of 1.7 million and I am working under her. That's amazing. That's a really big number. And Really. also, yeah, go ahead, Shashwat. No, I was just saying that it's really great of Canada to be so practical in these terms. We heard like Canadians are really nice people. Like it's a a global thing. I would say like a lot of people say the Canadians are really nice people. We might have like heard that Britishers are like a bit hostile, and even Americans are like with all the gun laws and Mhm. everything. But I heard that Canadians are quite nice people, right? The simple answer is this: Canada don't have their own peoples. In All Canada, right. 90% are immigrants. So they are Okay. set up in that way. Like if you are coming at my home, I will tell you Mm-hmm. the rules and you are following that rules. If someone also coming, so he also knows the rules. So is Okay. there is a parity. That's why Mm-hmm. Canadians is nice. That's good to hear. So before we move further, like, what's the one thing that you miss about India or like our college? Obviously, bro, food. Food, Like yeah. we don't have samosa here. We They have, don't but like do it's the very costly. like how much does it cost in like Canadian Like currency? recently I have saw like from $1 to $5 in very Mm-hmm. hi-fi restaurant. It's for $5 for one samosa. That's expensive. Yeah, even Is in it like worth it Hyderabad though? airport they have Mm-hmm. used to sell samosa for the 300 only, but in Canada Mm-hmm. it's you can say like 500 something average. Mm-hmm. Like, do you have more Indian batchmates in your batch, or like do you have more classmates that go along with Indian culture, or like who were maybe raised there, but like NRI people, or just the people who just went along with you? Actually, in Canada, if you are coming, you have to look for the province in which province you are coming. Hmm. Here the majority of three cities like Toronto, Vancouver and Montreal. Montreal is Okay. second most biggest city of the Canada, but the problem is there, like it's a French speaking state, and the city, particularly Montreal, is the biggest city and the IT hub also. So Mm-hmm. few universities only teach in English and rest are all teach in French. So here Indian people are very less. You can see South Mm-hmm. Indian. Mostly Mm-hmm. if there are 100 people, the 50 people would be South, and rest are from you can say Gujarat or the Punjab. whole India. Like, don't we have? I heard we have a lot of Punjabi brothers in Canada. No, in nah, Punjabis are in Canada, but if yeah, if you are saying Canada, that's wrong. If you Hmm. say in Toronto, yeah, there is a Mm-hmm. Punjabi, but in Montreal there is very less number of Punjabi, because in Toronto there is a hub of Punjabis. The ancestors there are Punjabis. Like you can say they are
4 to 5 generations are living in from Brampton. They are from Mm-hmm. Punjab and they are settled now. But in Montreal, there is a French language barrier. So we Hmm. personally do not used to come in Montreal region or the Quebec region. That's why there is Punjabis is very less. Okay, so from what I've heard is that English might be the most spoken language of Canada. But like, if you No, are pursuing education, English is not. English and French is the official language All for right. Canada and particularly for the Quebec state is Mm-hmm. only French is the official language. All the signboards, all the studies is comes in French language only. Unless and until there is a 3 to 4 top universities which provides education in English in Quebec. So, what level of language proficiency like should you have? Like, it's graded in A plus. Then we have A plus, B plus, right? Sorry, A1 to I guess. What's the unit they A1, used to? A2, B1, Yeah, B2. Yeah. exactly. Yeah. Hmm. So basically, if you are coming for abroad, you have to give the English proficiency test Hmm. because we are not native English speakers. We are So not there are the true. 3 or 4 kind of English tests. I gave Hmm. the IELTS test. Okay, So I scored 7 out of 9. that's a good And score. if you are above 6, if you are above 6.5, it's good to go with any university in Canada or the Okay. European region. Hmm. So, like about French though, like I got the English, but like you told Yeah, that French is quite essential if you want to study here in that region you are studying right now. So, yeah. what's your language proficiency in French? Zero right now. Hmm. Because we are in English speaking university right now. So problem Hmm. what we face in day to day life only, but we can manage by the Google Translator or the familiar words or the symbol. Hmm. So, from what I've heard, like these things never, we are never told about this. Like you just told about French. Yeah, Now, like such, I guess a lot of students also face difficulties in documentation too, right? yeah, sure. So, like, what are the challenges we face when we are like, signing for all the documentations and every paper we have to, gather? Like, could you just give us a few insights on them? Documentation regarding applying to university. Yeah, applying to universities and any other Okay. immigration formality do we have there? It's totally different based on your country chosen. Like Okay. every countries have different documentations Mm-hmm. and every university have a different requirements. If you are choosing the university in Canada specifically, you have to choose Mm-hmm. city first, like where you Okay. want to go. Because in Canada, there's a system called like I don't know what the name, but if you do the masters for 2 years, you will grant the work permit of 3 years. And if you Okay. do the 1 year study here, if then you will get the 1 year work permit. So all the Mm-hmm. major masters program are of 2 years, but recently IRCC announced that if you do Mm-hmm. the 1 year masters, you will get the 3 year work permit as well. So we have to look All the right. many factors that is depend on. And for the documentation, like I have Mm-hmm. applied to universities. The basic documents are similar. Like you have to give the English proficiency test. You have to Mm-hmm. give your transcripts. You have Mm-hmm. to apply like from passport. You have to give a good academic. And based of these four basic things, you have to give your personal branding. Like why Mm. you are only eligible, why not others. So that's the True. important part. What makes you If you different are from coming others, for, right? Like, So basically, you just yeah, have to sell yourself to them. mm-hmm. sure, sure. Makes If you're sense. coming for masters or any bachelor's program as well, Yeah. they Mm. just like what you have special. Mm. So they consider four thing mainly. Like if you give GRE, it's totally recommendable. And Mm-hmm. other than GRE, if you have a patent publication, book publication, research paper will be impactful many ways. Like in US, UK, Australia, Canada, these four countries value the research paper most. All So if right. you have done anything in this, they will select you. All right. Okay, That so makes sense. I might have a question for Cursor here. So as you stated, you obviously might be working there, right? Yeah. So I've heard that in Canada, there for students, they have like a limited work permit
work time allowance. So how often do you like work, and how does it go with your studies? Okay. So basically, Canadian government wants to learn first. Like if you are a student, their aim is to get the study first. But Mm. along with that, international student comes with a very high cost from back in India or your home country. So we have to manage here it well. You cannot survive on the money which parents are sending to you. You have to work. So they Mm. allows us 20 hours limit in a week. But recently after COVID, they increased it to 40 for certain period, and like Mm-hmm. previous year they have just extended that limited time. Like for me, like I applied in December, like sorry, not December, I applied in August. So I am in the bracket of extension, so I can work 40 hours till April, 30 April. So that's the case. If you are coming on January, or if you are comes in 2019, you are only allowed to work for 20 hours a week. But you can work legally 20 hours, but many people are doing like Indian, mostly Indians are doing like 20 hours on legal, and then Mm-hmm. other 20 hours or 40 hours, whatever they can have a free time, they are working on the cash. Makes sense. I don't suggest that, but basically you are coming for a study. If you are working 20 hours a day, sorry, 20 hours a week, you can like Mm-hmm. work 4 to 5 hours a day. Okay. Mm. And you have a studies as well. And here studies pattern are totally different from India. How though? Like, what's the major difference we have from in the study patterns? Yeah, if you're talking about study pattern in India, we just go to the college, take the class, come back, that's all. And we have a final a midterm and final term and few True. assignments. Mm. True. Here in Canada, we have a in masters particularly, we have a assignments, we have a quiz, we have a what we call projects, we have a midterm, we have a final Okay. term. Mm-hmm. All are for Mm-hmm. week. Like one assignment, one project, one what we call assignment quiz. These we have to, like if you have a class on Monday, the next Mm-hmm. Monday you have these kind of work to complete. This is so overwhelming. And And like, what's the yeah, grading system here? yeah, I'm coming on that point as well. Right. Like Mm. they have the three exam: midterm 1, midterm 2, and the Mm. project. Mm. And they split the percentage of grade, like first midterm will be 75 35%, second midterm will be like, sorry, not second midterm, it will be a final exam. It is also of Okay. 35%, and Mm. remaining 30% is of your project. And it's totally depend on the professor how they are dividing. Some Mm. professors divide 10% for the assignment, 5% for the quiz, and 5% just for the attendance. So it's vary to the professor. Everything is controlled by professor. Whether they want to take exam, whether they do not want to take exam, whether they want to write a research paper, whether they want to just assignment. It's all depend on the professor. I have three subjects right now. One of the subject have only research paper, nothing else. Mm. So all the students complaining here in India, like, see, that's how it Yeah, is in in foreign universities. previously, like you also may be doing right now. We Mm-hmm. just study night before exam and will Hmm. pass. Okay, Hmm. we enjoy the whole semester. But here, Hmm. if you do this, you cannot pass because the final exam is just for the 35% of the final for total grade. Okay. Hmm. So we So all have these to midterms and projects study are like, consistently on every week. hmm. So all these projects and everything totally mount up like for your degree, Yeah. right? It's not just your end term, right? No, 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 no. It will be on your degree. Makes sense. All right. Okay, so basically the thing is you sort of dig deep into it. You just stay in the mood all the time. Like not exactly you, but the whole thing keeps you in the mood, right? Sure. So, so like in India, there's like we get to how you said we get to exams and then we study a night earlier. So does it kill the curiosity there? Like it's always in the same, like Hmm. it always goes in the same manner. So like, are you that much curious as you used to be here? Actually, study pattern is different. If you go in every Western country, the study pattern is similar to the practical one.
But we in India do not prefer the much practical learnings. We usually depend on the theoretical aspects of the concepts. Mm. But when we go into like companies, we have to take the trainings, we have to take the seminars, and we are taking the courses as well. Like if you have a placement offer, the company might say to complete these courses. So the gap in study will fulfill at that end. But here in Mm. Canada or any universities, they are teaching throughout the studies. So whenever you will go to the job, they just say, okay, complete this program, and we don't give you any training like that. So, So that's sir, the if case. you, sorry, go ahead. Let's complete. Yeah. All right. So, suppose you're a student in college and you are in your bachelor's degree final year, and you want to pursue a higher education in a foreign country, right? So, could you lay out Yeah. a basic mind map or a blueprint for a student who is wishing, like, he wants to study in abroad, but like he has no clue what to do, like all the Hmm. documentation, what kind of documents he has to expect from college, and how to apply for visa and everything from A to Z. So as of now, if you are in final year student, the things will be changed. If you are Mm. third year student, things will be changed. And if you are Okay. second year student, it will be the better option. Or if you are in Mm-hmm. first year, that's if you are first year, you can get the scholarships basically. Okay. Because Mm. firstly, I will cover the scholarship part. In second year, there is a one organization called MyTex. They take the Okay. interview in second year, and Mm-hmm. first or second year they will like you will complete your in home country, and third or Mm-hmm. fourth year they will sponsor a 6 month internship in abroad. Mm-hmm. On all their expenses will be covered by the MyTex, so you wouldn't have to pay something. You have to just Mm-hmm. prepare in first year. Or if you're like when I was in second year, I prepared for like Mm-hmm. I have researched to why I want to go in Canada. So Okay. if you are thinking to go out, firstly think where you want to go and why you want Mm-hmm. to. Firstly, what India will not offer you. So Okay. main target is this. And if you are selecting the Canada specifically, then select the which province you want to go, Hmm. which university you want to go, which program you want to go. And if you are selecting the program, check the job aspect there. Like suppose Okay. if you are doing cyber security, jobs are there in Canada, they are in India as well. But what else in Canada? Like high pay, better lifestyle, much Mm-hmm. more. Okay. But in India, we wouldn't get that much pay, Mm-hmm. and lifestyle is normal, no problem. We can go to the families. But here in Canada, the main problem is this, like the homesickness as well. If you are Mm. staying here, so before thinking to go somewhere, just think before that, like, are you able to go, are you able to survive? These some questions are like to ask by yourself, not to Mm-hmm. others. And after Since you that, mentioned homesickness, like how do you yeah, fight it? Like, what's your tips for fighting homesickness? we will cover that part later. As of now, the Okay. flow is for the application process. I'm coming to Oh, I'm that sorry, point. interrupted you. I was okay. Sorry. No problem. So Mm. when you find your answer for these whys, then you will search the university and the program. When you Mm. select that, yeah, I want to go in that, then check the immigration policies of that particular country. And Mm-hmm. there right now there's a many agent who doesn't charge. But if you but before depending on any agent, do your research own. So I will skip the agent part now. And doing research is crucial. Check the program outline of your course, the courses they are teaching, and who's the professor are teaching that courses. These are the some questions. So get the answer of these. And later for the visa process in India is very simple. You have to just go to the IRCC website of Canadian Immigration and Consultant, I guess. Just go on that website, and everything is written proper format. You have Mm. to click everything. The all process is online. You don't go anywhere. Just do by your own. Like I filed my visa by my own. I applied in university by own. On the every university page there has a option apply now eligibility. You can just check the eligibility, documentation required, and ask the document from your current college or university. They will provide that.
Okay. Now coming to the question about homesickness, like how do you fight it? Okay. Like as of now, I don't find the homesickness because I am living with my roommates. They are all from Mm-hmm. India. So we are like family. Like you are staying there with your roommates. It's similar like here as well. Like, but if you are living with another person, like another country, there might be some homesickness because the cultural difference in between the home as well. So that's the issue. So Makes the sense. mool mantra for the away the homesickness is to Mm. be busy. Makes sense. बिजी इन Yeah. एवरीथिंग. Mm. अगर आप बिजी हो तो आपको होम सिकनेस होने का टाइम ही नहीं मिलेगा. True. So, sir, is there a change in your lifestyle as well? Like, do you like get up early and do the things you like your mom used to do them back in India? हाँ. So, like, how do you cope up with that? लाइफस्टाइल चेंजेस में बस इतना सा फर्क आया है कि अभी इतना नहीं आया क्योंकि मेरे को 2 महीने हुए एग्जैक्ट टू बी ऑनेस्ट. लाइक आज 27 है, 28 दिसंबर को मैं यहाँ पे लैंड हुआ था. Mm-hmm. तो Okay. इतना कोई लाइफस्टाइल में अभी चेंज नहीं आया क्योंकि हम सब इंडियंस रह रहे हैं साथ में. Mm-hmm. कुकिंग, स्टडी पैटर्न, लाइक बातचीत, पूरा माहौल वैसा रहता है अभी. तो इतना कोई अभी डिफरेंस नहीं आया. बट जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ कोरियंस के साथ रह रहे हैं, तो उनका ये डिफरेंस आया कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कुछ भी Mm. चाय वाय पी लिया, तो उनका ऐसा रहता है लो भाई अब जूस पी रहे हैं कनाडा आके. तो वो सब थोड़े बहुत चेंजेस आते Mm. हैं. Mm-hmm. It's a good change, right? Now we have a question from live. We ओके. have Ashish Goyal, and he just asked, like, could you tell us a little bit more about the accommodations? Like, I'm not very sure, like, what kind of accommodations he's asking about, but. नो, आई कैन गेट द पॉइंट. सो Mm-hmm. अकोमोडेशन बेसिकली यहाँ पे जब आप आते हो कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे. Mm. यहाँ पे हॉस्टल्स काफ़ी कॉस्टली रहते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के. तो यहाँ पे या Okay. तो आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है. अब ये Mm. भी डिपेंड करेगा आप किस प्रोविंस में, किस सिटी में, किस कॉलेज में जा रहे हैं. Mm-hmm. और सपोज कीजिए अथर्व ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहाँ पे किसी को नहीं जानता, अथर्व लैंड हो गया, अब अथर्व को आएगी प्रॉब्लम्स, तो वो कैसे Mm. रेक्टिफाई होंगी. अकोमोडेशन कुछ भी नहीं है तो आप एयरपोर्ट से सीधा कहाँ जाएंगे, कोई भी रिलेटिव नहीं है. जैसे True. मेरे केस में मेरा यहाँ पे कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है. ऑल्दो यहाँ पे जो बंदे पहले से सीनियर्स थे मेरे कॉलेज के, उनसे मैं कांटेक्ट में था. बट एट Mm. द मोमेंट ऑफ लैंडिंग कुछ लोग हेल्प करेंगे आपकी, कुछ लोग नहीं करेंगे. और ये जरूरी नहीं है जहाँ पर आप जा रहे हैं वहीं पर आपके फ्रेंड हो. सो Mm. व्हाट आई डू, मैंने 1 महीने का एयरबीएनबी बुक किया था. Okay. उसके बाद इंडिया से मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी जो बन गए थे, जो मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं साथ में, हम लोग की Okay. लैंडिंग डेट्स अलग थी. तो मैं Mm. 28 को लैंड हुआ. मैंने सीधा एयरबीएनबी ऑलरेडी बुक कर लिया था इंडिया से. कोई Mm-hmm. आप 7 डेज का कर सकते हो, 15 डेज का कर सकते हो, या 1 महीने. तो मैंने 1 महीने का सीधा किया था, हमको ये डील अच्छी मिली थी. जितना यहाँ Okay. पे यूजुअल रेंट जाता है उतना हमको एयरबीएनबी में दिया. उसके बाद Mm-hmm. एक एक करके हम चारों लोग वहाँ पे आ गए. उसके बाद जब 1-2 हफ्ते में हम सारे इमिग्रेशन वाले यहाँ पे लैंडिंग के बाद जो काम होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने घर ढूंढना स्टार्ट किया. Okay. फेसबुक मार्केट प्लेस और किजीजी, यहाँ पर Mm. ये दो सबसे अच्छे मार्केट हैं जहाँ पर आपको घर देख सकते हैं. लाइक ओएलएक्स जैसा किजीजी नाम से यहाँ पे चलता है, Mm. तो आप उसमें अकोमोडेशन देख सकते हो. इसके बाद आप जो यहाँ पे मल्टीज बनी होती हैं, अपार्टमेंट होते हैं, इनकी खुद की वेबसाइट्स होती हैं. और Mm-hmm. realtor.ca, apartment.ca, ऐसी काफ़ी वेबसाइट है रियल एस्टेट्स की. आप उन पे जाके उनकी इंक्वायरी के लिए आप मेल ड्रॉप कीजिए, वहाँ से आपको कॉल बैक आएगा, आप जाके घर चेक कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए उसके बाद. बट इंडिया से ही डायरेक्ट अकोमोडेशन आप बुक नहीं कर सकते. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ और होती है, इंडिया में हम मंथ टू मंथ पे करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब शायद मेजर सिटीज में होता है, बट जैसे मैं भोपाल में रहा था, तो जब अगर छोड़ना है Mm-hmm. तो 1 महीने पहले बता दो, हम चले जाएंगे, ऐसा सीन Notice रहता है. period. Mm. बट यहाँ पे, Mm. हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप 6 मंथ की लीज साइन करेंगे. लीज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है. या 1 साल Mm-hmm. की लीज साइन करेंगे, तभी आपको घर मिलता है. अगर आपने लीज साइन की है तो आपको पे करना ही पड़ेगा 1 साल तक. सो वो चीज़ इंडिया से ना करिए कि आपने फोटोज देखी, आपने लीज साइन करके पेमेंट कर दिया. यहाँ पर आइए, घर देखिए, उसके बाद ही लीज साइन करिए. तो ये बेसिकली अकोमोडेशन का वो है. और दूसरी चीज़, अब मैंने 2 BH के सपोज किए लीज पे लिया, और Mm. और एक रूममेट मेरा नहीं रह रहा, अब मेरे पास एक रूम वैकेंट है.
तो अब मैं Hmm. सबलीज कर दूंगा या किसी से बोलूंगा हाँ भाई तो आके रह सकता है, तो वो नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे ऐसे हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर सिटी उसके हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज $300 से $500 पर रूम आपको मिल सकता है। Hmm. That's a great advice, honestly. Shashwat? Yeah. Okay, so since the questions have been really serious until now, Mhm. uh, let's ease it off a little bit. So, Ankur sir, how is the weather there in Canada right now? Right now it's totally sunny, Okay. but before that we cannot say like it's sunny in after hour or not. It's depend Hmm. like on the weather. It's drastically changed here. Like Okay. what is the time right now? It's 10:41 a.m. It's a sunny, but you don't know on 11 a.m. it will be rain or the snow. So it's changed very. Snow? Like, does it snow there? Yeah, yeah, in Canada. It's a That Canada, sounds bro. so nice. Well, what you just said, some of that happened today here. Like Hmm. just before the meeting, uh, I also told you earlier that it all went out. Like our Yeah. host Atar, uh, he didn't have electricity. Like it all went out. Like in college, it was raining really hard, but we have to thank our team. They worked really hard and they put up this thing up, and Mhm. we're here talking Thanks to to you. Shashwat and thanks to you as well for joining us in the 11th hour. Bro. It was like such Thanks a to nice. everyone. Yeah. Shashwat, we are having some live questions. I just texted you them. Could you like please ask our guest here? Yeah, yeah, sure. We are now finally having a good activity here, and a lot of you are asking good questions on live, and we will entertain them. Okay, so one of the questions from Abhishek Maurya is, could you please provide the list of things that we need to bring before coming to Canada? Yeah, I will surely put it in a after the discussion. I have compiled all the necessary item. Even as well, I recently posted my video for the things you have to bring in Canada. Okay. We Uh, heard you have a YouTube channel, right? Yeah. Would you like to tell us about like something about your channel, and you can also promote it here? And I'm sure a lot of students would actually, really Okay. appreciate that. Mhm. So basically, my channel name is TVB in Canada, and Okay. I make this channel after the admission in my masters. So usually I put the things there like for the application process, whatever I am telling here in the detailed version of that is already posted on my channel for All the right. immigration and for the studies as well. Like I put the series for the visa application process, what the SOP is, how the GIC work, and many things at there. Recently, I am posting the things what you need to bring to Canada as an international student. You can check that YouTube channel. It's called TBB in Canada, and Instagram page as well. Ankur sir has over 10,000 subscribers, and he's quite popular actually. So he would That actually get is a good a help from you. different channel. That is a different Okay. channel, but I created the new channel. It's Okay. like 6 month or 7th month old, and it have Hmm. only 200 subscribers as of now. So you're running multiple channels. That's amazing. Right now, I closed that previous one. I am just focusing on the present one, TBB in All Canada. right. okay, so let's Um, move on to the next question right now. Athav, were you saying something? Okay. no, it's totally fine. Yeah, so the next question is from Yash Deharia. I hope I'm saying that right. So the question is, can you tell about current job scenario? So like how the jobs are there, the If you are opportunities. talking about particular part-time jobs, so in Montreal there is a lot of part-time jobs, but you have to skilled. Like if you are skilled, you can get the job. But if you're Okay. talking about the full-time jobs, I am not truly aware of that because I just landed here. I didn't even search for the full-time job as well. Like I will do search in my second year for the full-time, but as of now, part-time jobs are considered. Like I am doing like after landing here, I got the first job, and that after that in this month in February I got another job, but you have to skill.
something you have to know, they will hire you for sure. But in Toronto, there is crowded place. Like for the one job opening, there were 100 or 200 people, so there is a tough competition. All right. So, like, I guess he was asking about the placement in Canada or something, but Ankur sir just landed there and he will explore more and you can check out more details. He'll keep posting on his channel. Yeah, till And now, based I, on the research, for full-time jobs, university wouldn't provide you the placements. You have to apply by their own. But if your hmm. program have the internship, like there is we have a program, we don't have internship and we have internships. So if you are Okay. enrolled in with internship program, then after first semester they will check the credibility or the courses or grade of the first semester, and Hmm. based on your interview, they will put you in a TNP kind of school. Like you can say we have a TNP department and all students are enrolled already. But here in particular in my university, they have a TNP department which is called co-op school, and they just put those students, those are qualified for the co-op, like based on their first semester result and the interview. And after that, on in co-op school, they will list some job applications, job postings, and you have to apply. And they will give that training as well, like for the resume building and the cover letter. Here cover letter is very important. Hmm. So they will introduce how to write cover letter, and you have to just apply if you are in co-op program. And if you are not in a co-op program and if you don't get the co-op, so you have to apply by off campus like in India. All right. So, like, sir, I wanted to ask you that, like, your current major is in cybersecurity, right? You're doing Yeah, masters and pursuing it. So, what kind of jobs can we expect, like, in Canada or maybe anywhere across the globe? Like, what kind of jobs are we expecting after doing this degree? particularly in Canada, there are different titles for this job. Like we have a cyber security analyst, we have a red hat hackers, we have a white hat hackers. Okay, so basically, being in cyber security, you have to decide whether you want to go in defensive position or the offensive position. And based Okay. on these profiles, there's multiple titles. Like one of I remembered, it's uh, what is we call cyber security analytics analyst, and we have like many of this similar kind. I don't know actually because I didn't even research about it much. All right. And so, I guess we will now move to our final segment, and I would request Shashwat to have some rapid fire questions. Okay, so are you ready, Ankur sir? We don't want, Sure. like, we just want some rapid answers, like, whichever pops into your Okay, head okay. first, and you want Yeah. to, like, you just shoot it Just at us. don't Okay. think too much. Yeah, the first thing that pops out, you have to answer that. Yeah. So, shall we start, sir? Ah, sure, bro. Let's Okay. go. So the first question is, what is the most surprising aspect of Canadian culture? uh, Here in metros they do not have washrooms Oh God. in metro And stations. mhm. So like, you just have to go home, or like ask Yeah, someone. you have to go home or if you have to go out and go to any buildings nearby where have the toilets. Okay. Okay. So let's move on to the next question. One thing you miss the most about our college? Our college, we can, what we can say, like a part of the food. Let me think about Mm. this. We can skip this question for a little bit. I will answer this definitely. All right. Okay. Best academic tip for succeeding in a master's program? To be consistent. All right. Be Yeah. consistent. Okay. Okay. So the next question. What is a quick advice for handling homesickness while studying abroad? बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. लाइक आई एम डूइंग यूट्यूब. आप कुछ भी कर सकते हो. लाइक बुक पढ़ो, तो घूमने निकल जाओ, एक्सप्लोर करो. बस फ्री मत बैठे रहो. Being busy, the ultimate medicine, और right? एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं. यहाँ पर काफी लोग ऐसे रहेंगे कि आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे. स्टे अवे फ्रॉम देम. चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर कोई ऐसे दिमाग पे दे रहा है कि भाई इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे करेंगे, भाई दूर हो जाओ उससे. सोचो ही मत. Positive vibes only.
We don't entertain Always positive. negativity. That's a good. Yeah, that was really a good point. Okay, so one personal question. You said you miss samosas a lot. So, in Canada, what do you eat? What's your favorite? Uh, मोस्टली हम लोग खुद ही कुक करते हैं घर पे, okay, क्योंकि बाहर जाके आप खाओगे आपके $30 से $40 वो लग जाते हैं दिन के। okay, Expensive. यहाँ पे एक सबवे का बर्गर $10 का आता है, 10 से 12 का। तो बेसिकली खाना हम खुद ही कुक करते हैं, पता है वो तो हम Hmm. खा लेते हैं। अगर हमको नहीं पता, बहुत सी बार ऐसा केसेस हुआ है कि हमको नाम पढ़ के फैंसी लगता है, जब खाने को जाते हैं तो कोई टेस्ट नहीं, यहाँ पे ब्लेंड फूड Hmm. मिलता है आपको, कोई सॉल्ट, कोई पेपर, yeah, कोई स्पाइस, कुछ नहीं रहता। तो वो Hmm. थोड़ा सोच के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस बहुत ही कम ऑप्शंस हैं आपके पास। सिर्फ सबवे है एक अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जाके एक बर्गर ले सकते हैं। बाकी आप रेस्टोरेंट्स पे जाएँगे तो आपको ब्लेंड फूड मिलेगा। अगर आपने वेजिटेबल्स बोल दिए तो वो जस्ट आपको एक बाउल दे देंगे बॉइल्ड फूड का कि आप ये खाओ। so like an That's kind Indian of depressing. foodie, for an Indian foodie, it's hard to survive in Canada. हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपको कुकिंग नहीं आती। Hmm. अगर आपको आती है तो आप पकवान डेली बना सकते हो अच्छे-अच्छे। Yeah, and और कनाडा आ रहे हो Indian या ones, कहीं भी जा रहे हो तो कुकिंग तो सीख के ही जानी चाहिए, सबसे True. बड़ी चीज़ है। अगर आपको कुकिंग yeah, आती है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे। और उसके True. बेस पे ही मुझे जो भी मैंने अभी पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ, एक 5 स्टार होटल में काम किया था और अभी मैं हार्वीज़ में काम कर रहा हूँ, तो वो भी कुकिंग के बेस पे ही लगी है। okay. Okay, so there was this one question left in the rapid fire round. हुँ, हुँ। One thing you miss the most about our college. तो ये है अभिषेक द्विवेदी सर जी की क्लास। होप यू Okay. आर इन दैट। उनकी So, क्लास में एक्चुअली फन होता था। okay. Yeah, how do you not miss like the epic crazy student life, like bunking classes and everything? सब किया है। फर्स्ट अगर आप कौन से ईयर में हो अभी आप लोग? Uh, Third. we're Both of currently us. third, yeah. थर्ड में हो ना, तो अब तो नहीं कर सकते इतनी चीज़। बट Hmm. True. जब हम लोग थे तो हमने बंक भी किया है। फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी एंजॉय किया है। सेकंड सेमेस्टर से कोविड आ गया था। फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी एंजॉय किया, और तब हमारे डीन सर काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अभी Hmm. इतना नहीं है। तो अपने वो उपाध्याय सर के डंडे भी खाए हैं पीछे ग्राउंड में भागते हुए, Hmm. अमित बोध सर के। Hmm. तो एक्सपीरियंस सब कुछ करा है। कॉलेज में अपने ऊपर बैठे भी हुए हैं, अपनी जो वीआईटी बिल्डिंग है उसके ऊपर जाके। Such an amazing session we had today, right? So now we just like to take the final question from the audience we had here, and then we'll conclude the session. And it's from Abhishek Maurya. He ओके, asked ki, sir, getting jobs in Canada is referral based or just on your skills? Does it give you an upper hand if you have any referral? श्योर। यहाँ पे रेफरल का बहुत ज़्यादा खेल है। Hmm. इंडिया में भी धीरे-धीरे कल्चर आ रहा है, लाइक आप ज़ोमैटो पे अगर जाएँगे तो वहाँ पे सीधा लिखा रहता है, इफ यू हैव रेफरल देन वी विल हायर यू। तो यहाँ पर भी सीन ऐसा ही है कि अगर आपका रेफरल है तो आपको तुरंत चुटकियों में जॉब मिल जाएगी, अगर रेफरल नहीं है तो मिलेगी। नो प्रॉब्लम, टेक द क्वेश्चंस। All right, because these juniors are really, they wanted to ask these questions for a long time. So Prince Harsha asked, even I also got an offer letter from Concordia and Masters in Information Security ओके। Systems. So can I travel हुँ, from हुँ। Ottawa to Montreal? ओटावा टू मॉन्ट्रियल इट्स 200 किलोमीटर्स। सो अगर आपकी Okay. क्लासेस वीक में 3 दिन है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स आप कितने ले रहे हो, क्लासेस की Hmm. टाइमिंग। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ओटावा से मॉन्ट्रियल आओ बार-बार, क्योंकि हफ्ते में आपको 3 बार आना पड़ेगा। यहाँ पे क्लासेस होती है 2.5 घंटे की। आप किस शेड्यूल में Okay. आपकी क्लासेस हैं? लाइक कुछ क्लासेस का टाइमिंग होता है 11:45 टू 2, और कुछ जैसे मेरी टाइमिंग है 5:45 टू 8:15 इवनिंग में। Okay. तो आप कैसे वो ट्रैवल करोगे? अगर आपके पास खुद की कार है तो आप आ जाओ, बट ऑटोवा में अगर आप रह रहे हो फैमिली के साथ तभी ये करो। अगर ऑटोवा में सिंपल आप रेंट लेके रह रहे हो तो आप मॉन्ट्रियल आ जाओ, क्योंकि मॉन्ट्रियल काफ़ी चीप है ऑटोवा से।
That's a good tip. And sir, the last question we have is from Arpit Tiwari. He's asking, is there any roadmap that I can follow step by step to target a good university? For good university roadmap, I have prepared something. Let me show you that. What I did actually when I was in second year. Sankal, could you please put this on the main screen? Are you guys able to see this? Just a minute, sir. Yes, we can. या सो ये मैंने बनाया था 2021 के टाइम पे, जब मैं फोर्थ या All फिफ्थ right. सेमेस्टर में था, आई गेस फोर्थ में ही था। Mm-hmm. तो बेसिकली हमको यहाँ पे काम क्या क्या करने हैं बिफोर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेगा, ये आपको बताता हूँ। पहले पहली चीज हमको चाहिए एसओपी, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि हम वहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हम कैनेडियंस को देंगे और क्या इम्पैक्ट हम होम कंट्री को अपना देंगे। तो ये इसकी Okay. पर्टिकुलर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, टीबीबी इन कनाडा पे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में ही एलओआर, ये चीज हमको लगेगी यूनिवर्स अपने सॉरी ये प्रीवियस कॉलेज से, Letter लेटर of ऑफ recommendation, right? रिकमेंडेशन। या Okay. तो ये डिपेंड करता है मास्टर्स की यूनिवर्सिटी पे कि वो कितने रेफरेंस किससे लेना चाहते हैं। लाइक जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 3 एलओआर रिक्वायर्ड थे फ्रॉम द Hmm. एकेडमिक्स बैकग्राउंड, तो मैंने एक लिया था अपने एचओडी सर से, सुशील सर से, दूसरा Hmm. हुमा मैम से लिया था, और तीसरा मैंने अपने इंक्यूबेशन डायरेक्टर से डॉक्टर अनुराग सर से लिया था, क्योंकि उनके अंडर में काम कर रहा था एक टाइम पे। तो मैंने Okay. ये 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लगाए थे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका 1 या 2 लेटर शायद कॉलेज से लगता है और एक आपके मैनेजर से लगता है। आई डोंट नो Hmm. एग्जैक्टली अबाउट द जॉब सिनेरियोज। इसके बाद मैंने आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दिया है। जो मेन चीज़ आपको हाईलाइट करनी है वो है आपकी जीआरई, रिसर्च पेपर या पेटेंट। इनमें से कुछ भी आप करते हो तो वो चीज़ ज़रूर से हाईलाइट करना है, और एक चीज़ कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर कर लो, इससे आपकी प्रोफाइल बाकियों से थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। आफ्टर देन आपकी मार्कशीट, फर्स्ट टू एट्थ सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट, एक कंसोलिडेट मार्कशीट आपको आरजीपीवी से मिलेगी। जब आप आरजीपीवी के पोर्टल पे जाते हो ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई ट्रांसक्रिप्ट। तो आप जिस भी Okay. सेमेस्टर में हैं और जो भी सेमेस्टर आपने Hmm. पास कर लिया उस सेमेस्टर तक का कंसोलिडेटेड मार्कशीट आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट बेसिकली प्रिंट स्टैम्प होके आपको ऑप्शन मिलेगा कि कोरियर करवानी है या आरजीपीवी से पिक करना है, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद आइल्स का या जो भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं उसका रिजल्ट, और कुछ कुछ प्रोग्राम्स में लाइक कुछ यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम सैंपल एंड सॉल्यूशंस का ऑप्शन होता है। जैसे अगर आप Hmm. अप्लाई करेंगे मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हैमिल्टन में, तो मैं उस Okay. शॉर्टलिस्ट की थी उस यूनिवर्सिटी को फॉर द प्रोग्राम ऑटोमेशन। तो Hmm. उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि आप कोई ऐसी प्रॉब्लम खुद से जनरेट करो, उसका सॉल्यूशन दो, उसके बेस पे हम आपका इंटरव्यू Okay. लेंगे। और लास्टली ये आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट लगता है, जो कोई कोई मतलब बहुत ही कम जगह लगता है, बट ये बनवा लो कॉलेज से तो ये बेटर है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज। और वीजा के लिए और आफ्टर अप्लाइंग यूनिवर्सिटीज जैसे हमको एक्सेप्टेंस आ गया वो, इसके बाद यहाँ पे दूसरा अपन को एसओपी लिखना पड़ेगा फॉर वीजा पर्पस। ये एसओपी लिखी थी फॉर यूनिवर्सिटीज। इसके बाद अगर आप क्यूबैक आते हैं तो आपको एक स्पेशल लेटर लेना होता है, सीए क्यू बोलते हैं इसको। ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, इसकी भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे बना के रखी है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप Okay. लोन लेना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन पे आपको लोन का प्रोसेस करना है। या तो यूनिवर्सिटी से पहले करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल सकती है, बट आफ्टर यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर है तो लोन लेना इजी रहता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम मिलती है। फिर वीज़ा के लिए मेडिकल एग्जाम भी देना पड़ता है, और एक कंडीशन रहती है कैनेडियन गवर्नमेंट की, आपको जीआईसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। Okay. तो ये मैं 3 बैंक सिलेक्ट कर रखे हैं, लाइक सीआईबीसी, स्कॉशिया बैंक और आरबीसी। ये 3 Hmm. बैंक है। इन तीनों में से किसी में एक अच्छे टॉप के बैंक्स हैं ये, तो इनमें से किसी में भी आप जीआईसी अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, वो इंडिया में। और वीज़ा की एक और रिक्वायरमेंट है, अगर वीज़ा की पर्टिकुलर बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो रफली Hmm. मैं बता देता हूँ। आप एसडीएस कैटेगरी में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 1 ईयर की फीस एडवांस में पे करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को, और उस चीज़ की आपको रिसिप्ट वीज़ा एप्लीकेशन में लगानी पड़ेगी। All right. उसके बाद
वीज़ा के लिए आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे, और ये बाकी के काम कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो All ये right. आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आपका रोड मैप जो रहेगा, आइल्स का एग्ज़ाम आपको देना है, ये आप कब दे सकते हैं? चाहे 2 साल की या 3 साल की, इसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है, तो आप पहले भी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने मार्च में दिया था, Hmm. उसके बाद मैंने 7th सेमेस्टर में अप्लाई किया था, और बेसिकली एप्लीकेशन खुलती है 10 से 12 महीने पहले। जैसे Hmm. सपोज़ करो, अगर आपकी ग्रेजुएशन जून 2024 में कंप्लीट हो रही है, मई 2024 में, तो आपको सितंबर 2024 में आपको मास्टर्स करना है, तो आपको 2023 दिसंबर के आसपास अप्लाई करना चाहिए। All right. और कनाडा, यूएस में 3 बार एडमिशन्स होते हैं। एक होता है फॉल इनटेक सितंबर, एक होता है विंटर इनटेक जनवरी, एक होता है समर इनटेक मई में। बट वो Hmm. कंसीडर मत करो, उसके लिए बहुत फैक्टर्स हैं, वो बाद में कभी मेरी वीडियो पे चैनल पे कोई वीडियो आएगी, देख लेना। टारगेट आपको हमेशा फॉल इनटेक करना है, इसके बाद विंटर इनटेक करना है। तो मैंने भी पहले फॉल इनटेक ट्राई किया था, सॉरी हाँ, फॉल इनटेक ट्राई किया था, बट उसमें मेरा लोन का प्रोसेस नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर मैंने विंटर का अप्लाई किया था। तो ये विंटर के लिए परफेक्ट रोड मैप आपको बताया कि कब आपको क्या स्टेप लेनी है। इसके बाद दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप्स के लिए। ये माईटेक से लिंक में आप चाहे तो उस डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद So could you please zoom it a bit? अगर Like I guess all the students can see it clearly. Yeah, ओके, it's clear now. Hmm. सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है माईटेक्स। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, तो आपको ड्यूरिंग द समर वेकेशंस आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉम द कैनेडियन यूनिवर्सिटीज। रिसर्च करने का मौका मिलता है, और उस ड्यूरेशन में जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो आप रिसर्च के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगी, कनेक्शंस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली आप काफ़ी ग्रो कर जाओगे बाकियों से जो आपके साथ में रहते हैं, और इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा। अगर आपको बाहर जाना है, तो सबसे अच्छा मौका माईटेक्स के थ्रू है। काफ़ी लोग इसके थ्रू गए हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए माईटेक्स के बारे में, तो आपको मिल जाएगा। ये 2 लिंक मैंने दिए हैं आपको, ये व्हाट इज़ माईटेक्स और इस प्रोग्राम के बारे में क्या है ये बताया। दूसरा, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये दोनों लिंक है, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना था। इसके Okay, बाद sir. स्कॉलरशिप्स के लिए वी मेक स्कॉलर्स की एक अच्छी कंपाइल्ड लिस्ट है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। 215 प्लस इसमें स्कॉलरशिप्स बताई हैं, बट बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम। लाइक फॉर द कुछ डॉक्टर्स के लिए है, कुछ बैचलर्स के लिए है, कुछ मास्टर्स के लिए है, और कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप लड़की हैं, तो उनके लिए अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये सब आप खुद से रिसर्च करेंगे, जितना खुद से डिग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। All right, sir. And sir, या we have also put these links in the description right now. All the श्योर। viewers who are watching us live can access to them. And Shashwat, I'm assuming you had a question, right? Yeah, so okay, so this might be our final question. So ओके। since doing a master's in a foreign country is like a really big step. I don't know for you, like since you've done it now, you might be very normal with it. But for us, for the people who want to pursue a master's degree in a foreign country, uh, what should they really trust? Like, did you like have a gut feeling or anything? Because it's obvious If you that are It's a big okay, step. yeah, it's a really big it's step. a it's a really big step. I understand that. Like you have to left your home, friends. Basically, आपके यहाँ पे दूसरा एक वर्थ होगा फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी उस कंट्री में हैं, तो आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल सकती है, इनपुट्स मिल सकते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप खुद अपनी दम पे ही आ रहे हो, फैमिली से पहला बंदा है जो इंटरनेशनल जा रहा है, तो आपको काफ़ी हार्डशिप्स यहाँ पे लगेंगी। इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे। और दूसरी चीज़, पैसा भी काफ़ी लगता है। ऐसा नहीं है कि कह देते हैं कि भाई इतना मैनेज हो जाएगा, या कुछ लोगों पे होता भी है, वो चीज़ नहीं कह रहा। बट इतना सब कुछ लगाना वर्थ है कि नहीं, इस चीज़ का आपको जवाब आपको खुद से ही ढूँढना पड़ेगा कि मैं जा क्यों रहा हूँ। जो शुरू में मैंने 4 क्वेश्चन्स आपसे पूछे थे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कनाडा में क्या है, इंडिया में क्या नहीं, इन सब चीज़ों के आंसर के बेस्ड पे आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है, अगर आप जॉब करते हैं या आपको लग रहा है कि इंडिया में मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जांपल अभी प्लेसमेंट मतलब जॉब मार्केट अच्छी नहीं है, इवन इन इंडिया और Recession. कनाडा। Hmm. हाँ, रिसेशन चल रहा है, Yeah. प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं उतने अच्छे। हमारे टाइम पे प्लेसमेंट्स अच्छे हुए थे काफ़ी, अभी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहे।
तो आप एक यहाँ पे एज ले सकते हो कि 2 साल में अगर मैं मास्टर्स करता हूँ वहाँ पे, तो मुझे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर मी, मैं 23 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थे फ्रॉम द TCS एंड म्यू सिग्मा, और भी हो जाते, बट Hmm. अपने कॉलेज में कैप लगती है, तो उस चक्कर में ज़्यादा ऑफर्स मैं नहीं बैठ पाया। और इस ड्यूरेशन के बाद ये सीन था कि इंडिया में अगर मैं 4 साल काम करता हूँ तो मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा, और वही चीज अगर आप कनाडा या किसी और कंट्री में 4 साल काम करने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस लेवल पे पहुंचूंगा। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। अब सपोज करो आप इंडिया में, अगर आपका, ये भी डिपेंड करता है एज फैक्टर पे कि आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो, आप स्टार्टिंग से ही आपका डॉश बैंक में लग गया, 20 लाख का पैकेज आपका है ऑन द एज ऑफ 20 या 31, ठीक है, जो यूजुअली ग्रेजुएशन की डेट ईयर्स होती है, लाइक 22 मान लो, 22 की उम्र में आपका 20 लाख का पैकेज लग गया, फ्रेशली ग्रेजुएट हो, तो आपको कभी भी फॉरेन मूव नहीं होना, पहली चीज तो। क्योंकि यहाँ पर आके आप 22 साल की उम्र में 2-3 साल आपके खराब हो जाएंगे, 25-26 हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ मास्टर्स करनी पड़ेगी या कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा, या डायरेक्ट यहाँ जॉब लगती है, वो अलग सिनेरियो है। मास्टर्स की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो आपको मास्टर्स के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, और जो आपको 20 साल 25 साल की उम्र में इंडिया में अगर 20 लाख मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। और फिर वहां से आपकी ग्रोथ इक्वली हो जाएगी, जो यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा। बट मेरे सिनेरियो में इतने अच्छे पैकेज नहीं लग पाए थे, तो मैंने कंसीडर किया कि अगर 2 साल मार्केट खराब भी रहती है, उस ड्यूरेशन में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, और उस मास्टर्स के थ्रू मैं फिर स्किल कर सकता हूँ। Thank you so much, sir. We really appreciate your honesty, and the roadmap was totally amazing. I think it kind of, cleared all the questions everyone had, Mhm. and we'll try to provide everyone with that PDF or like Word if you can possibly try for it. And Sure. that's it. We're gonna conclude our seminar now. And once again, thank you so much, और Ankur sir. Thank you so much, Shashwat. Thank you so much, Sankalp. ऑथर, Thank you एक so एक much, चीज TNP और मैं यहाँ department. पे बताना चाहूंगा Yeah, sure. Hmm. कि जिसको भी इमिग्रेशन या क्यूबेक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो Hmm. सिंपली मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और मेरे यूट्यूब पे जाके मेरे को मैसेज और डीएम्स कर सकते हैं। इवन यू कैन शेयर माय इंडियन नंबर, व्हाट्सएप, इंडियन नंबर का। तो जो भी जितने भी क्वेरीज होते हैं, लाइक एलन सिटी के लिए पर्टिकुलरली तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारे एमपी से बहुत कम बच्चे जाते हैं बाहर, पहली चीज Hmm. तो। बट जिसको भी अगर आना है, गाइडेंस चाहिए, तो आई एम हैप्पी टू शेयर ऑल द इनसाइट्स। तो जो भी डाउट है सीधा बॉम्बार्डिंग कर देना, कोई Hmm. इशू नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे कुछ भी That's very क्वेश्चंस पूछ kind of you, सकते sir. हो। इन फ्यूचर अच्छी जॉब मेरी लगती है तो आई एम मोर हैप्पी देन टू गिविंग द रेफरल फॉर दैट आल्सो एज वेल। That's very kind of you, sir. Thank you so much once ओके। again. Now, request Shashwat and Sankalp to please conclude this meeting. Thank you so much. We'll see you guys again. And once again, ओके गाइस। this was brought to you by Go Global Club. And again, thank you, TNP. Thank you, Allen City. And we will keep bringing such amazing guests and seminars for you guys. Once again, thank you so much. See you soon. Thank you so much, sir. Okay, so we hope we Meeting बंद कर दी मेरी 1 मिनट